मतलब आप किस तरह से इस सोसाइटी को देखते हैं? मतलब किस तरह से अभी कितना हम लोग नीचे हैं और कितना ऊपर जा सकते हैं और जा सकते हैं तो किस तरह से ऊपर जाएँगे? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर उससे बहुत जल्दी नौकरी भी लगता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। 인도에서 엔지니어는 꿈의 직업입니다. 그곳을 향한 가장 높은 사다리 인도 공과대학. This is your last exam. मैंने उसको शुरू से यही बात बोला कि मैंने बेटा मेरे तो मेहनत कर ही रहा हूँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे को भी कभी रोड पे काम करना पड़े। तो इच्छा रही कि हम चाहे अपना खेत बेच दें लेकिन बच्चा हमारा पढ़े। 사다리 맨 꼭대기를 향한 천재들의 레이스가 인도를 뒤흔들고 있습니다. 혁신의 본고장 실리콘밸리. 전 세계 최고의 인재들이 모이는 곳이죠. 여기서 퀴즈 하나 내보겠습니다. 이 기업들의 공통점이 뭘까요? 아, 유튜브도 포함이요. 최고 경영자가 모두 인도인입니다. Welcome to Google I/O. 세계를 움직이는 IT 기업들은 인도 출신 수장들로 채워지고 있습니다. 그래서 인도의 별명이 CEO 수출국일 정도로 이들의 영향력은 대단한데요. They started rising in technologies and proving their competence to the point that no one could deny that they would be successful. Of course, we see this switch which is, wow, there's tremendous talent in these immigrant groups. Information, so based on that it is taken. Hold on. No, let me answer Indranil's question. So, gold layer is where you have curation, that is done, and then eventually reporting layer. So, I am Jitendra Kumar. I am currently a software professional where I work for a consulting firm. 세계 최대 컨설팅 회사 딜로이트에서 일하는 쿠마르 씨. 그는 인도에서 나고 자랐습니다. I got my first job in India for one of the largest steel producer in the country, and then it was one of the consulting firm for whom I was selected, and I came to New Jersey in '97. Since then, I've been working here in US. What's there to eat? There is some fruit and Yeah. How was your day in the office? it was good. I didn't have too many meetings today, and I also found out that I have Friday off. 그는 여기서 많은 걸 이뤘습니다. But they're Now, one of my kids, she's also earning, and having a home in Silicon Valley is not easy. That was truly a dream come true. 쿠마르 씨는 지금의 성공이 인도 공과대학 출신이기에 가능했다고 생각합니다. IIT had changed everything. After this IIT happened, I got into this professional career, I would say, working for a reputed company. Otherwise, I had my father's business. Likely, I would have been consumed there and I would have been another person in the crowd. So you can call it the biggest breakthrough or game changer. That was IIT. 인도 동남부에 위치한 첸나이. 최고의 두뇌들이 모인 인도 공과대학 마드라스 캠퍼스를 찾았습니다.
그런데 입구부터 경비가 삼엄하네요. எங்க போறீங்க? உள்ள ஷூட் பண்றாங்கண்ணா. உள்ள ஷூட்டிங் எடுக்கறாங்க. ஷூட்டிங் பண்றாங்க. ஆமா. யாரு பர்மிஷன் யாரு கொடுத்தாங்க? பர்மிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. 촬영 장비까지 꼼꼼히 검사를 받았습니다. 국가 중요 기관인 인도 공과대학. 신분이 확인된 이들만 출입이 가능합니다. ஓகே, थैंक यू. ஓகே, थैंक यू. 드디어 세계적인 명문 공대에 입성하는 순간입니다. 그런데 가도 캠퍼스는 나타나지 않고 숲풀만 점점 더 무성해지는군요. 사슴과 원숭이가 사는 이 깊은 골짜기를 5km나 달린 후에야 학생들이 보이기 시작합니다. 상위 25% 학생들만이 응시할 수 있고 다시 100대 1의 경쟁을 뚫어야 입학할 수 있는 인도 공과대학 IIT. IIT는 인도 전역에 23개의 캠퍼스가 있습니다. 그중 IIT 마드라스는 7년 연속 대학평가 1위를 차지한 최상위 캠퍼스. 인도인에게 IIT 입학은 대단한 명예로 여겨집니다. In India, when you graduate from an IIT, your life blossoms and your whole family's life change. It's where the smartest among 1.4 billion come together. And so all the companies are trying to get their graduates at the highest possible salaries. Did geniuses come together at our school? Or are we making geniuses here? Let's find out. 인도에서 가장 똑똑한 학생들은 의대가 아닌 공대를 선호합니다. 그 중에서도 컴퓨터공학과와 전기공학과는 입학 성적 상위 10%만이 선택할 수 있는 인기 전공입니다. 수업 방식도 남다릅니다. 교수의 일방적인 강의가 아닌 질문과 답이 오가는 수업. Clear? Any questions? Yeah? What voltage? So, based on the characteristics alone, can we tell what kind of breakdown we are? Yes, very good question. Basically, even in reverse bias, there are two types of currents, tunneling current and the normal kind, the probability e raised to. Everything is normal. There's nothing abnormal in this whole thing. 이 과정에서 학생들은 스스로 답을 찾아갑니다. 최고의 수재들이지만 이들의 잠재력을 최대치로 끌어올리기 위해 계속되는 교수의 질문. Quickly, someone come and draw it. You come and draw it. Yeah, and what is the value at xn? Yeah. Yeah, so delta Pn, right? Honestly, it's one of my most favorite classes because those classes will have very often discussions which involve the process input continuously for the student to improve. They should not be sitting silently in class. I think what we do is that we try to encourage them to speak to us, to talk with us. Problem solving, right, or innovating is asking something, right? I mean, if you're a scientist, they should speak, right? I mean, it's very, very important. 빡빡한 일정 중 천재들은 뭘 하며 쉴까요? 인도에서 시작된 체스 게임. 그 중에서도 3분 안에 승부를 내야 하는 스피드 체스입니다. 초를 다투는 치밀한 돈의 싸움이 스피드 체스의 매력. 머리를 쉬는 건가요? 쓰는 건가요? It requires a lot of accuracy, speed, and you have to play the moves within a very short period of time. Many students play speed chess. It is very popular in the school because the time control is lesser and it is very exciting till the end of the game. 학생들의 점심시간.
We eat all our lunch and dinner in the mess, sleep in the same hostel. 인도 공과대학은 전교생이 기숙사 생활을 하는데요. 심지어 교수들까지 캠퍼스 내 숙소에서 지냅니다. Professors also stay here. Like that means they're very reachable also. So any doubt, like they're always reachable to you, and it's extremely helpful. And it's so much fun. Everyone like goes to somebody's room. We can watch a movie together, order food together. We just celebrate Holi and. 기숙사 내부는 촬영이 어려워 학생들에게 기숙사 소개를 부탁해봤는데요. I will begin my room tour of my gigantic room 401. This is where I live with my roommate. That is my roommate's bed. This is my bed. And that is the end of the room tour because that's how small my room is. Everything is very, very tiny and compact. But this is my home. So our room is very small, so we can't really fit a table inside. So whenever I'm studying, I have to do it on the bed. In our hostel system, it's like when it's time, 8 a.m. class, you wake up at 7:40, you knock on each door. You're like, wake up, wake up, wake up. You know, it's a sense of community. You're like, you become a family by the end. So me and Priya share everything, which means a lot of our stuff is in my room. And I am not willing to walk down a flight of stairs to give it to her. So we built a system. Priya! Yeah. Why are you there? Come down. Efficient, fast, and I don't have to walk a single step. Modern? No. Thank you. Dana. 인도의 수재들은 이렇게 함께 공부하고 경쟁하며 엔지니어가 되는 밑거름을 다집니다. 대학이라기보다는 엔지니어 사관학교 같은 인도 공과대학의 독특한 시스템. 이는 영국으로부터 독립한 인도가 처음 IIT를 구상했을 때부터 철저하게 계획된 것이었습니다. After India got its independence, the first Prime Minister of India wanted to make sure that infrastructure is built. Manpower for creation of infrastructure had to be done through an engineering education. So he got the help of many countries, including Germany, USA, Japan, in order to establish what are called Indian Institute of Technology. 독립 후 피폐했던 인도의 현실. 초대 총리 네루는 과학만이 인도의 미래를 바꿀 수 있다고 믿었습니다. 인도는 나라를 재건할 기술 엘리트들을 집중 육성하기 시작했습니다. 인도 공과대학은 인프라 건설을 위한 산업 인력의 요람이었고 때문에 이론 중심 교육이 아닌 현장에 투입할 실무형 인재를 기르는 데 집중했습니다. 이런 배경에서 인도 공과대학의 실용적 학풍이 생겨났죠. We have been constantly changing our curriculum, tuning our curriculum to make sure that the students have the practical knowledge. In order to do that, we do have a lot of projects that we take up with the industry so that students who are associated with the faculty members can wet their hands in the problems that the industry is facing. 언제든 현장에서 일할 준비가 된 인도 공과대학 학생들. 때문에 캠퍼스 채용 기간이 되면 학생들을 선점하기 위해 기업에서 먼저 지원서를 들고 와 줄을 섭니다. How many companies? More than 300 companies. 300 companies this year. 입장이 거꾸로 된 거 아닌가요? 아무튼 놀랍습니다. Jobs like consulting companies, the top consulting companies come here to recruit the students.
top IT companies, Google, Microsoft, Amazon, all those companies come here. 지난 1월 인도 공과대학 마드라스 캠퍼스에서는 기술 축제가 열렸습니다. 글로벌 기업들의 후원을 받는 아시아 최대 규모의 기술 축제인데요. 학생들이 직접 제작한 RC 카들의 경주가 한창입니다. They just missed the tire. They just missed it. 축제 준비를 위해 학생들은 수개월씩 매달리기도 한다는데요. What are all the things there in the real car? Yeah. In this mini car, it has suspension, it has steering, it has engine. If the climate is too cloudy, so we need to reach the engine. The more fuel is need for the engine. Oh, okay. So Okay. That's all we need to adjust. Okay. It depends on the temperature. Okay. It's pretty cool. 샤스트라는 단순한 축제가 아닙니다. 학생들이 자신들의 능력과 아이디어를 후원 기업에게 선보이는 기회이죠. So here, what we want students to do is to give them a platform to display their skills, their projects, their interests to all the industry experts that we invite, to all the sponsors, all the big companies who come in here to sponsor. 깊은 밤, 학생들의 발걸음은 기숙사가 아닌 도서관으로 향합니다. It's actually not late night. For IITians here, 3 o'clock in 3 a.m., 4 a.m. will be the late night. Then's the normal time when we sleep. 3 a.m. or 4 a.m.? Yeah, that's the normal time when we sleep. 도서관만큼이나 밤새 불이 꺼지지 않는 곳, 바로 혁신센터입니다. 학생들 스스로 아이디어를 발전시켜 제품을 만들어내는 곳인데요. 시타르타가 친구를 찾아왔네요. Hey Abhishek. Hello. Hi. How are you? What are you guys doing now? We are building a beach cleaning bot, bro. Actually, we visited Marina Beach. It was dirty, so we thought of building this thing. Oh, really great idea. 이것은 자율주행 청소 로봇입니다. 내장된 7개의 GPS 센서로 로봇이 해변에 쌓인 쓰레기를 스스로 찾아가도록 설계했습니다. That GPS will be knowing the live location of where the bot is. So we'll be defining an area on the website which the bot has to be cleaning. And on that area, the bot will be autonomously calculating the most optimum path so that it can clean. 이렇게 대학 재학 중 만든 프로젝트 중 상당수가 스타트업으로 발전하고 있습니다. 현재 인도 스타트업의 3분의 1이 인도 공과대학 출신들이 만들었을 정도인데요. 이제 학생들은 기업을 만드는 리더로 커나가고 있습니다. IIT 출신의 인재들이 만든 기업은 이미 인도의 대기업, 유니콘 기업으로 성장해 있습니다. 이제 인도 공과대학은 기술 인재 양성소를 넘어 리더의 산실이 되고 있습니다. We are consistently now making them, encouraging them to become an employer rather than an employee. Because being a premier institution in the country, if my kids do not become employers, who else will become? In such a way that they understand the genius in themselves. They discover the genius in themselves. They explore the genius in themselves and utilize, exploit the genius in themselves. So this is where we focus on. 인도 공과대학에서 잠재력을 분출하는 인도 청년들. 그들의 미래는 성공과 안정을 보장받는 특급 열차에 올랐습니다. 그러나 그들의 꿈은 안락한 가두리를 넘어서는 것, 세계의 정점을 향하고 있습니다. 누구도 가닿지 않은 최고의 목표를 가질 수 있는 자신감, 그것이 IIT가 주는 가장 큰 특권입니다.
I want to contribute to the field and probably like make some new discovery, prove something new, so that can revolutionize the field, sort of like. Actually, I enjoyed. I chose this stream for the education alone and not to live an easy life. I want to be intellectually challenged on a day-to-day basis, so that it's like playing a game for me. But you're still constantly wanting to do more and more things so that you can get the best opportunity. Yes, you can get an opportunity, but you want the best. So you will never stop competing. 가는 곳마다 인도 공과대학 최우수 합격생을 내세운 광고판이 실비한 이곳은 인도 최대 입시학원 도시 코타입니다. 매년 15만 명의 아이들이 인도 공과대학 입시를 치르기 위해 고향을 등지고 이곳을 찾습니다. 첫 수업은 아침 7시부터 시작됩니다. 인도 공과대학의 입학시험 과목은 수학, 화학, 물리 단 3과목. 하지만 세계에서 가장 어려운 입시 문제로 정평이 나 있는데요. 이렇다 보니 전국에서 가장 공부를 잘한다는 아이들이 새벽부터 강의실을 가득 채웠습니다. 인도 공과대학의 입학시험은 1차를 통과해야 2차 시험을 볼 수 있는데 2차 시험의 응시 기회는 단 2번뿐입니다. ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। मेरा 12th क्लास में मैंने भी दिया था। मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया था। एडवांस के लिए मैं एलिजिबल थी, पर मेरा एडवांस में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था मैथ्स का। इस वजह से मैं कोटा आई थी कि मेरी जो लास्ट चांस है मेरा ये, और मुझे कोई वो नहीं चाहिए कि मेरी लास्ट चांस में मेरा वो नहीं हो पाया है। 주정부 장학금을 받으며 최상위권이었던 아카시. 하지만 첫 시험부터 낙방했습니다. आपका जो लास्ट टाइम आपने एग्जाम दिया था जेई का, सो आपका क्या परसेंटेज आया था? उसमें मेरा 63 परसेंटाइल आया था। जेई मेंस में कम से कम 80% तो ओबीसी कैटेगरी में आनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो गए एडवांस दिलाने के लिए। करीबन आप ये मान के चल रहे हैं कि 15.5 लाख क्लासेस हैं, तो 15.5 लाख बच्चे टॉपर हो गए, तो जाहिर सी बात है कि वो सब टॉपर नहीं है। तो बेसिकली वो जो भ्रम होता है ना कि मैं टॉपर हूँ, वो भी शायद कोटा आके टूटता है। दे फर्स्ट टाइम फेसेस द रियल वर्ल्ड। 인도 전역에서 가장 합격생이 많은 도시. 그래서 학원은 늘 전국에서 모여든 학부모와 수험생으로 붐빕니다. 코타 학원가에서는 등록 시 1년치 학원비를 한꺼번에 지불해야 해서 부담도 상당합니다. 아버지, 삼촌까지 온 이 가족은 600km를 달려왔습니다. यहाँ कोचिंग का नाम सुना था कि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए बच्चे को लेकर आए हैं। इतने दूर से आप आए हैं, थकान महसूस नहीं हो रही है आपको? बच्चों के लिए कहीं थकान महसूस होती है? बच्चों की खुशी के लिए थकान महसूस नहीं होती। तो इच्छा रही कि हम चाहे अपना खेत भेज दें, लेकिन बच्चा हमारा पढ़े। 드디어 상담이 시작됐습니다. 12 पास है। 1,65,000 आपका फीस रहेगा। 40% अभी इस पे स्कॉलरशिप क्राइटेरिया चल रहा है। अगर आप 15 मार्च से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 40% का आपको स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया डायरेक्ट मिलेगा। आज 13 तारीख हो गई, तो वो only 2 days। आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल 2 दिन में करना। नहीं, आप दे दो ना, क्या हुआ, आप अभी जाकर दे दो या फिर कल दे दो मॉर्निंग में। 등록금을 감당하기 어려워 대출을 받기도 합니다. 코타 1년치 학원비와 기숙사 비용은 한 가족의 1년 소득과 맞먹는
큰 액수이기 때문입니다. 인도 공과대학을 향한 열망이 빚어낸 도시. 코타의 거리엔 학원 유니폼을 입은 아이들만이 가득합니다. 인도 공과대 합격생 배출을 위한 기숙학원 도시. 사람들은 이곳을 코타 팩토리라고 부릅니다. 고향을 떠나온 입시생들의 숙소. 빡빡한 공부 스케줄과 빈번한 시험을 견뎌야 합니다. 막대한 비용을 들여 이곳에 온 아이들은 엄청난 부담을 안고 있습니다. IIT जाकर आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं? ऐसा सर मैंने कुछ नहीं सोचा अभी, बस IIT भी तो जाना मकसद है मेरा। मैं 6 घंटा बहुत कम सोया हूँ। मैं यहाँ कभी कभी शुरू में 2 घंटा 3 घंटा भी सोया हूँ। इस चीज़ को सोच के डर लगता है कि आप इतना सारा एफर्ट कहीं वेस्ट ना हो जाए। 지난해 치른 시험에서 한 차례 낙방한 아카시. 이제 단 한 번의 기회만이 남았습니다. एक्चुअली चाह तो बड़ी है, IIT दिल्ली में मैकेनिकल चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कि लगेगा नहीं। 너무 간절해서 다른 길이 보이지 않는 아이들. 이곳에선 2, 3주에 한 번 학생들이 극단적 선택을 했다는 소문이 돕니다. 인도인들의 엔지니어에 대한 열망은 언제부터 시작된 걸까요? 세계적 IT 붐이 일었던 90년대, 인도는 부족한 인프라 대신 두뇌 산업을 기회로 여겼죠. 인도 정부는 IT 기업들을 유치해 기술 산업 기반을 확립했고 한 해 150만 명이 넘는 엔지니어를 집중 육성했습니다. 이를 주목한 건 미국이었습니다. तो जब 1990 में आईटी इंडस्ट्री बूम करने लगी सिलिकॉन वैली सब जगह पे अक्रॉस द ग्लोब करी, बट जाहिर सी बात है यूएस ने इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। तो इतने कर्मठ और ऊर्जावान इंजीनियर्स अगर कहीं मिल सकते थे कम कीमत पे, तो शायद इंडिया से बेहतर कोई वो देश नहीं था। तो हमारे यहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स की सोर्सिंग होने लगी और जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत नाम भी वहाँ जाके कमाया, बहुत शोहरत भी कमाई। तो इसका प्रतिफल ये हुआ कि जो उनके पीछे छूटे हुए साथी सहयोगी जो उन्हें देख रहे थे हमारे देश में, उन सभी लोगों में इंजीनियरिंग को लेकर बहुत क्रेज़ बढ़ गया। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग को लेकर उनकी बहुत डिमांड। 엔지니어에 대한 열망은 인도의 모든 곳에 스며들고 있습니다. 아리프 씨는 코타시에서 20년째 용접 일을 하고 있습니다. 그늘 하나 없는 찻길가에 앉아 생계를 이어가는 삶이 고달프지만 인도 공과대학 입학 시험을 준비하는 아들을 생각하면 힘이 납니다. इनका लड़का बहुत तरक्की करेगा इनकी मेहनत की वजह से। थैंक यू। मैंने उसको शुरू से यही बात बोला कि मैंने बेटा मेरे तो मेहनत कर ही रहा हूँ, ऐसा ना होगा कि तुम्हारे को भी कभी रोड पे काम करना पड़े। चला गया तो बहुत ही बढ़िया है, हम उसको ऐसे गले से लगा के रखेंगे। 상위 10% 부자들이 국민 총소득의 절반 이상을 차지하고 카스트에 따른 직업의 차이가 현실 속에 남아있는 인도 사회에서 이를 뛰어넘을 수 있는 유일한 길이 인도 공과대학 입학이기에 아버지는 더 간절해집니다. तेरी काम आएगी पड़ेगी हमारे क्या। उससे पहले हुआ था जो वाले ऐप पर अपलोड मेरे पास तो आई नहीं।
आपके पास वो मैसेज पे नहीं भेजे इस बार, क्या डायरेक्ट ऐप पे ही डाल दिया ये कितना आए थे नंबर? ये 27 नंबर आए। इस बार मैंने अच्छा नहीं कर पाया था क्यू पेपर में। रात मेहनत कर, दिन में ही पढ़। दिन में भी आज पढ़ा था, आज का तो पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। कोई भी बुलाए फोन तो मत जाना किसी के कोई काम से, तू घर पे रहता तो देखो फोन करते हैं मनमान में। बाकी मैं पापा इतना नहीं कर सकते थे कि है ना वो उसकी फ़ीस भर सकें, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था, यानी धीरे कर रहा था पर कर जरूर रहा था उसकी तैयारी। 가장 낮은 곳에서도 인생 역전을 위한 경주에 온 가족이 뛰어들고 있습니다. नहीं, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब करे भाई। बेशक करना भाई, मैं सबको कहती हूँ भाई दुआ करना मेरे बेटे के हक में भाई। 코타에서 치르는 마지막 모의고사. 인생을 건 시험이 코앞으로 다가왔습니다. All the very best students. This is your last exam. 인도 공과대학 입학으로 계층사다리 꼭대기에 닿고자 하는 욕망이 지금 인도를 휩쓸고 있습니다. तो आप किस कैंपस में और कौन से मेजर में जाना चाहते हैं? सर IIT दिल्ली में ही जाना चाहता हूँ मैं सर। IIT खड़गपुर। सर IIT खड़गपुर और CSE ब्रांच। जी IIT बॉम्बे CS ब्रांच। Actually everyone wants to go in CS branch in IIT बॉम्बे। तो क्या लगता है आपको 1 महीने के बाद आप अपने ड्रीम को सच में कर पाएंगे? या ऑब्वियसली। 모든 것을 내건 경주는 계속되고 있습니다. 인도 북동부 비하루주에 위치한 파투아톨리. (100년) 전부터 대대로 수건을 만들어 온 이 가난한 마을에 믿기 어려운 일이 벌어지고 있다는데요. तो आपके घर में कोई IITian है क्या? हाँ, मेरा भाई एक है जो IIT BHU में पढ़ रहा है। किस घर में मिलेगा और दूसरा IITian? दूसरा IIT ऐसे एक्चुअली वो पीला वाला घर है उसमें मिलेगा। पीला वाला में? हाँ। नमस्ते। कौन से कैंपस में था आंटी? कानपुर है। कानपुर में था? हाँ। यहाँ तो करीब 200 तो जरूर होगा, ये ऊपर भी हो जाएगा। तो जिसके भी घर में इंजीनियर हो हाथ खड़ा कीजिए। अभी एक ठो है आसाम है, वो हवाई जहाज का इंजीनियर है, और 2 ठो है IT का है। तो आपको बहुत खुशी हुआ होगा? खुशी है ये, नहीं पढ़ाते ना तो फिर यही मजदूरी करते उसको भी जिंदगी चल जाती। 파투아톨리에서는 주민 대부분이 수건 공장에 기대 생계를 이어가고 있습니다. 돈을 벌기 위해 나온 어린 아이들도 곳곳에 보입니다. टोटल साल मेरे फादर नहीं है, मदर से है, 3 बहन हैं, तो शुरू से यही सब काम कर रहे हैं जी। शायद 9 साल या 10 साल के होंगे, आज से 4 साल हो रहा है काम करते हुए। 인도 전체에서 문해율이 가장 낮을 정도로 공부와는 거리가 멀었던 이 마을에 기적이 시작된 건 30년 전. 첫 번째 인도 공과대학 합격생이 탄생한 후부터입니다. 매년 수십 명씩 IIT 합격생이 배출되는 신화도 그때부터 시작됐다는데요.
마을의 첫 합격생이 오랜만에 고향을 찾았습니다. 우리가 실리콘밸리에서 만났던 쿠마르 씨네요. 금이 환영하는 발걸음이 가볍습니다. साड़ू जी ठीक चाल हो हाल चाल ठीक हो नमस्ते 합격생 1호로 이제는 마을 유명 인사가 된 쿠마르 씨. नमस्ते बाबूजी 엔지니어로 성공한 그를 이제는 누구보다 자랑스러워하는 아버지지만 30년 전엔 지금과 많이 달랐다는데요. कब चले गए यहाँ से मैंने पेरेंट को बोला ही नहीं कि आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सब कहने पर या अनुमति मांगने पर उसका क्या परिणाम होगा। उस समय तो यहाँ का ये पैटर्न था कि कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता था तो उसको उस पर व्यंग किया जाता था कि अब देखो ये पढ़ाई लिख करके शायद वैज्ञानिक बने वगैरह वगैरह। तो जितना ये व्यंग लोगों से मैं सुनता था उतना ज़्यादा और इसके लिए मैं प्रोत्साहित होते चला गया। अगर ऐसा लोगों का परसेप्शन है तो ये परसेप्शन को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 그가 대학 졸업 후 미국까지 진출했다는 소식은 마을을 뒤흔들었습니다. वो अमेरिका गया, हम लोगों को बहुत खुशी हुई और उसके बाद से ही शुरू हो गई। लोग को ललक हुआ कि नहीं एक चीज़ है, पढ़ने से ऐसा हो सकता है, तो उसमें लोग आगे पढ़ना शुरू किए, जो कि यहीं अपने आपस में ही बैठ करके कंबाइन कर करके अधिकतर लोग पढ़ते हैं। 공부를 하면 인생이 바뀐다. 쿠마르는 마을 사람들에게 살아있는 증거가 됐습니다. 그렇게 파트와톨리의 도약이 시작됐습니다. 삶을 개척할 수 있는 무기가 그들에게 주어졌습니다. 수건 공장 노동자가 아니라 엔지니어를 꿈꾸는 아이들이 많아졌습니다. 그쯤 아이들에겐 조력자도 나타났는데요. ये कौन किताब है? बायनोमियल पढ़ रहा तुम? आज का टेस्ट पेपर डिस्कशन है क्या? और ये सब मैग्नेटिज्म वगैरह हो रहा ना? एसी और इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। हो जाएगा पूरा। मेरा नाम चंद्रकांत पाटेश्वरी है और मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं बीटेक कोचिन यूनिवर्सिटी से पास आउट किया, उसके बाद 2 साल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया। जब मैं बचपन में था तो एक मेरा फ्रेंड था, तो वो अपने पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसका फाइनेंशियल इश्यूज था। तो इसलिए बचपन से ही मुझे लग रहा था कि अगर कुछ ऐसा काम करना पड़े कि जो किसी का भी इस तरह से पढ़ाई ना छूटे, तो उसके लिए प्रयासरत मैं बहुत पहले से ही था। 형편이 어려운 아이들은 브릭시 공부방에 나와 무료 수업을 들을 수 있죠. 누가 시키지 않아도 공부가 하고 싶은 아이들이 이곳을 가득 메웁니다. 선생님은 윗학년 형 누나들, 9학년이 8학년을, 8학년이 7학년을 가르칩니다. हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? हाँ, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया, जैसा कि जानते हैं हम। कैसा रहा? IIT에 입학한 마을 출신 청년의 수업. कशिश, यस भैया। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वापस बताना तू। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। 인도 공과대 입시를 앞둔 학생들을 위해 일주일에 3번 온라인 강의를 해줍니다. 세계에서 가장 어렵다는 입학 시험에서 매년 수십 명씩 합격자가 나온 비결은 자신의 미래를 바꾸려는 절박함과 그것이 실현 가능하다는 희망이었습니다. डेफिनेशन होता है कि
आज की क्लास अच्छी थी। ऐसे मैं जनरली अपने भैया का ऐसे क्लास लेते नहीं है मुझे, लेकिन आज लिया तो मुझे अलग भी लगा और बहुत अच्छा भी लगा। आज जो टीचर थे वो तुम्हारे बड़े भैया थे? हाँ, और उनको देख के लगता है कि मेरा भी ऐसा टाइम आना चाहिए कि मैं सबको पढ़ाऊँ और भैया मुझे अपने प्राउड से देखें। 인도에서 가장 가난한 지역 중 하나인 이곳. 주민 대다수가 수공 공장 노동자인 이 마을에서 교육은 사치다 생각하는 부모들도 많죠. 아들보다 딸에게 더 그렇습니다. 그래서 이곳 소녀들은 중도의 학업을 포기하는 경우가 많았는데요. 카시 씨에게도 8년 전 그런 위기가 있었습니다. 학교에 다니며 열심히 공부하던 8살 무렵 찾아온 불행. कशिश के पापा को मतलब हार्ट अटैक हो गया था। कशिश स्कूल नहीं गई थी, वही जिसे डेट हुआ था तो कुछ दिन नहीं गए थे। हम भी सोच रहे थे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करें, जैसे अभी इतनी है, इन लोगों से काम कराएं कि मैंने क्या कराएं। 카시 씨 엄마는 뱃속의 아기까지 4명의 아이를 홀로 감당해야 했습니다. 학교에 보낼 돈은커녕 당장 하루 먹을 형편도 안 되었던 그때. 다른 집처럼 카시 씨를 공장에 보내야 하나 고민이 깊어졌죠. 결국 카시 씨는 학교를 그만두고 엄마와 일을 나갔고, 그 무렵 브릭시 공부방을 운영하던 찬드라 칸트가 카시 씨 가족을 찾아왔습니다. पहली बार जब हम लोग गए, हमारा टीम गया वहाँ पे कशिश के घर पे, तो ऑब्वियसली सब लोग रो रहे थे और वो बच्ची बहुत छोटी छोटी थी। तो हम लोगों ने मतलब समझाया पहले उसकी मम्मी को, और कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी ले गया था तो उनको दिया कशिश को। तो फिर समझाते समझाते फिर ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि ठीक है, आप ब्रिज में आना चालू करो। 소녀들도 공부방에 모이기 시작했습니다. 아침부터 저녁까지 온종일 공부방에 앉아 잠시 농담도 하지 않습니다. मूल से भी निकाला +2/2 और जो कि इसे बोल सकते हैं 1/2 + 1। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा। वृक्ष मेरे लिए एक बहुत ही बेस्ट आइडिया लेके आया, जो कि एक गुरु से भी गुरु बोल सकते हैं। यहाँ ये नहीं होता तो मेरे को कुछ नहीं अभी तक यहाँ तक पहुँची होती। 그리고 드디어 재작년부터 여학생 5명이 인도 공과대학에 합격했는데요. क्या पढ़ रही है? सब आता है समझ में? हाँ, तेरी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक से पढ़ो बढ़िया से, समझ गई? 엔지니어라는 꿈의 행렬에 이제 여학생들도 합류하기 시작했습니다. मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ और सबकी हेल्प करूँगी इंजीनियर बनकर। सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई बहन को देखूँगी और फिर उसके बाद और जो जिसका बाकी है वो हेल्प करूँगी सबको। 한밤 파트와톨리의 기계 소리가 그치지 않습니다. 100년을 이어온 업은 사람들을 먹여 살리기도 동시에 목재기도 했습니다. 이 방직기 밖의 세상을 상상하기까지 꽤 오랜 시간이 걸렸죠. 그리고 이제 소년과 소녀는 새로운 페이지를 넘기고 있습니다. 아이들은 제자리에 있지 않죠. 이 땅 또한
그러할 것입니다. 가장 어두운 시간에도 약동하는 이 마을처럼 말이죠. 마을의 첫 번째 인도 공과대학 입학생 쿠마르 씨. 그가 아이들 앞에 섰습니다. तो मैं इस रो में देख रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, यहाँ भी लड़कियाँ देख रहा हूँ और ये साइड में तो सब जगह लगभग लड़कियाँ हैं। जिस समय मैं स्टार्ट किया था एक भी लड़की शिक्षित नहीं थी, तो लिटरेसी रेट लड़कियों के लिए 0% था। कंट्रोल या पेरेंट वगैरह के कारण जो है नहीं होना चाहिए। भैया मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं 12th में हूँ और मैं IIT का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब किस तरह से अभी कितना हम लोग नीचे हैं और कितना ऊपर जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो किस तरह से ऊपर जाएंगे। बस जो है मेहनत और लगन की ज़रूरत है और थोड़ा प्रोत्साहन की ज़रूरत है। लेकिन अगर 100 में से 10 भी जाए तो 10% इज मोर देन एनफ। और वो जो है 10 जाएंगे तो आगे के बच्चों के लिए वो प्रोत्साहन बनेंगे। तो ये जो है चेन रिएक्शन से जो है वी कैन गो मच फार्दर। 가장 깊은 곳에서 불붙은 뜨거운 에너지가 인도의 엔진을 움직입니다.